Ever heard about diamond problem in programming language? No? See it in the notes. Diamond problem. Basically, a problem that shows an ambiguity error is known as diamond problem. So, if it's a problem, then obviously बात है कि इसका solution भी होगा. And yes, guess what? Solution is what? Solution is the virtual base class. Virtual base class is a solution. And what's the diamond problem? Let's us understand it in deep. So basically, suppose that we have a class. Name something what you have to give. Suppose that we have a class A inherited by two of its derived class B and C, inherited by a derived class C. See, a diamond structure will form. But when we creates the object of D, it shows an ambiguity error. When we create the object of D and calls the function of A, because if both the class inherits this and C inherits the both, means it may contains the property of this class indirectly. I think you get it. I think you get it my points. दैट कि ये अगर क्लास इनको इनहेरिट कर रही है, ये पेरेंट क्लास ये चाइल्ड के फीचर्स इनहेरिट कर रही है, नहीं ये चाइल्ड ये पेरेंट के फीचर इनहेरिट कर रही है, व्हाट आई मीन. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इनहेरिट कर रहा है इन दोनों को, तो इसके लिए ये पेरेंट क्लास हो गई. तो इसके पास जो इसकी प्रॉपर्टीज या फीचर्स थे वो इसके पास भी होंगे. यस सर, ऑब्वियस सी बात है. बट जब हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करने की कोशिश करेंगे ए क्लास के फंक्शंस को या फिर मेथड को, सो वो एक्सेसिबल ना हो पाएगा, वो एक एरर शो करेगा. एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम. बेसिकली इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू लाइक Amazon, Microsoft, Google, etc. And it's a core concept you must have to know. So in the next video we will understand the program of this problem and the way to solve it. So